We are waiting for Dr. Nasir Pajani, principal of our college. So then we will formally start this extension lecture. हेलो। Yeah, please, ma'am. हाँ सर, एक मुझे आपसे ये करना था। जस्ट चेक में देखना चाह रही हूँ कि मेरा जो पेपर है ना, उसका साउंड क्लियर है क्या? ये शेयर से ही शेयर से ही हो जाएगा मैम। हाँ, शेयर से तो वो साउंड का ऑडियो का सेटिंग में करके रखी थी, लेकिन वो लाइट गया तो वो सेटिंग में कर गया। आई डोंट नो वेदर इट इज स्टिल शेयर्ड और साउंड फिर से मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि समहाउ मैं वो करके रखी थी सेट। जस्ट टू बी श्योर कि वो साउंड कोई साउंड आ रही है क्या? नहीं मैम, अभी फिलहाल तो नहीं आ रही है जी। ओके, नहीं आ रही है ना? आई थिंक जी शेयर के साइड से ही करना है, शेयर कंटेंट या वेब ब्राउजर। जी जी जी, वहीं से करना है मैम। शेयर नहीं, ये मेरा यूट्यूब तो आपको शेयर हो रहा है, बट इसके साउंड का बिल्कुल हो रहा है मैम। हाँ, साउंड का मुझे देखना था। Ma'am, video is not played. नो, वीडियो मैंने अभी पॉज मैम किया काइंडली है। प्लीज योर वीडियो। जब वीडियो प्ले किया तो वीडियो दिख रहा है, बट द साउंड इज नॉट कमिंग, दैट इज इट। हाँ, Good morning, Dr. Ranjeeta. यस, Dr. गुड मॉर्निंग Ranjeeta, मैम। good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मुझे वीडियो दिखाई दे रहा है आपका। यस यस मैम। It's nice आपने पहले शेयर किया। टाइम वेस्ट, सॉरी मैं थोड़ा नो नो, जॉइनिंग में इट्स लेट फाइन, हो इट्स गई। फाइन मैम, इट्स फाइन। मुझे सिर्फ इसका साउंड का थोड़ा सा, एक सेकंड। साउंड तो आपकी क्लियर है। या मेरी साउंड क्लियर है, ये वीडियो का साउंड का वो मैं देख रही हूँ। कल मैंने किए थे, कहाँ से किए थे आप वो इसी भी मैं, that I want to मैम काइंडली प्ले द वीडियो। या वीडियो प्ले मैम करके भी काइंडली प्ले द वीडियो आप शेयर करके चेक कर लीजिए। अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ओनली 40 पार्टिसिपेंट आर देयर। आप अभी ट्रायल कर सकती है मैम, 2-3 that is मिनट कर fine. लीजिए आराम। हाँ, एक्चुअली कल मैं करके सब कुछ सेट करके रखी थी,
और उसके बाद लाइट चली गई तो वो सेटिंग नहीं कर दैट इज व्हाई ऑडियो वीडियो वीडियो में जाके स्पीकर मोड पे देखिए। हाँ ओनली थिंग इज कंप्यूटर साउंड शेयर करना है। आप इसे प्ले करें तो आ जाएगा, प्ले कीजिए। नहीं प्ले किया मैंने, देखिए बट साउंड इज हाँ हो नॉट गया, अभी आया। साउंड आ रही है क्या? म्यूजिक आ रही है क्या? नहीं मैम। अभी टाइम लगेगा, टाइम किसी नहीं आ लगेगा रहा। मैम। आप अपना ना म्यूजिक इसका वॉल्यूम देखिए, यूट्यूब का वॉल्यूम सब वॉल्यूम चेक कीजिए। एवरीथिंग, यस एवरीथिंग इज देयर। पुट इट ऑन द स्पीकर मोड मैम। आप इसको फुल मोड पे करके चला दीजिए, देखिए 5 मिनट। कई बार ये हाँ थोड़ा लेट लेट रेस्पॉन्ड करता है। नहीं ये इसमें हाँ आई थिंक, हाँ आई थिंक आई हैव गॉट इट नाउ। अभी आ रही है आवाज? म्यूजिक आ रही है? अभी नहीं आई, आएगी, देखो। अभी आएगी। हियरिंग चली गई है मैम। हाँ हाँ अभी मैं फिर से इसको स्टॉप करके शेयर करती हूँ। हाँ जस्ट अभी म्यूजिक आ रही है? अब शेयर स्क्रीन हो गई। हाँ आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, म्यूजिक आ रही है? आ रही आ रही है हाँ जी, मैम, हाँ आ जी, रही आ है। रही आ रही आ रही है। ओके फाइन। हाँ एक्चुअली मैंने वो कंप्यूटर साउंड पे शेयर कर ली। ओके हाँ नाउ इट्स ठीक है। फाइन। या नाउ आई एम रेडी। आप इसको शेयर स्क्रीन रहने दे सकती हैं, और बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आएगी जब आप इसे फुल मोड में करेंगी, तब या आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। नीचे आइकन्स इसमें नहीं शुरू में now it's मेकआउट fine. नहीं होते कि कहाँ पर है। Yeah now it's fine. Okay आप now बहुत बड़े let's बड़े start. प्रोग्राम्स, मैम आप बहुत बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, और आप बड़ी जल्दी इसे कर लेंगी। इट्स नॉट अ बिग Big प्रॉब्लम। हो गया ये, actually set हो गया अभी। Actually I'm It's not good, much good. used to with Zoom, that's why Cisco Webex में हाँ हाँ, classes अभी हम sharing Zoom पे करा रहे yeah okay ma'am now let's start then हैं। और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको, प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे। वरिंदर, फिर आप सबको म्यूट पे लगा देना अगर ज्वाइन भी करते हैं तो। एक्सक्यूज मी, मैम ऑलरेडी म्यूट पे हैं जी। मैम नो ना मैम with your due permission will I start?
With your due permission, Principal Ma'am. So in the start. Yeah, thank you so much. Thank you so much, ma'am. A very good morning to all present. Govindgarh Public College. Okay. Govindgarh Public College, Alor Khanna, welcomes you all on the online WebEx Meet platform. GPC College is performing exceedingly well under the able guidance of Dr. Neena Seth Pajani, a sagacious, dynamic, and energetic personality. So, in the series of the online WebEx lectures, today we have organized a lecture titled Music Therapy for Ailing Various Ailments. So in this progression, I would like to request our worthy principal, Dr. Neena Seth Pajani ji, for formally start this session. Kindly, There ma'am. is a Over to you, connection principal, ma'am. problem, I suppose. My voice is not audible to you, ma'am? My voice is audible to you, ma'am? Yes. For me, it's Okay. fine. प्रॉब्लम बीच बीच में सिग्नल चला जाता है. Okay, ma'am, I have converted this fact to Professor Narendra Palji in their fixing it. ठीक. Yes, ma'am, it's fine. Completely okay. Yeah, ma'am. Over to you, ma'am. I have already started. Dr. Neena Seth Pajani ji, please, over to you, ma'am. Kindly formally start this session, please. Okay, ma'am का connection टूट गया. I think so. Just wait. Am I audible? Hello? Audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाँ जी ma'am. Hello? You are audible, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. जी. Hello? Hello, Dr. Ranjeeta, am I audible? Yes, ma'am. Now you are audible. बीच में आपके आवाज कट हो गई. मैंने फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है. कनेक्शन 126 135 लोग ज्वाइन हो गए थे वो बैंडविड्थ की प्रॉब्लम होता है हमारी जो बैंडविड्थ गलत हो गई
मैं बंदर को भेजा मैं तो नीचे जा देख करेक्शन कोई और तो नहीं मैडम ने छोड़ के भेजता है मैडम ने प्रॉब्लम आ रही है वो पूरा एक लेटर की कोई प्रॉब्लम दे दी हेलो हाँ जी हाँ जी आई थिंक मैडम के बैंडविड्थ के प्रॉब्लम्स है. Yeah, so computer faculty is going to fix that problem. Very soon we will join again. But if you then I can start directly. No problem at all. ये तो बैंडविड्थ के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं इसमें. Because I'm having college also afterwards, so that's why I'm in a hurry. By Chatterjee. If you say I can start directly, there is no need of formalities and all. By that time, I guess we can interact with the students. Because Hello. A very good morning, ma'am. This is Professor Rupinder. good morning. Yeah, we can start directly. I think if there's some problem we can of connectivity, we'll start and later on, madam can. She'll join in soon, ma'am. Yeah, give it's us fine. 2 or 3 minutes. Because students are also waiting, no? So if you permit me, I can start directly. Ma'am, Yeah, please. yeah, I'm going to start now. Okay, ma'am. Okay. I'm going to formally start this extension lecture. All right. First, it's my great honor and privilege All to right. read out the brief profile of Dr. Ranjeeta Chatterjee. She is assistant professor at Shri Ramkrishna College, Pune. She is MSc Zoology, UGC NET, PhD in Environmental Science. She has 20 years of rich teaching and research experience. She is great classical vocalist, trained in Nazrul Giti and Ravindra Sangeet, as well as dancer in creative streamed by Shri Uday Shankar and Shrimati Amla Shankarji. Besides, acted as cultural coordinator and team manager of SP Pune University for AIU Youth Festival and Avhan. She organized and hosted various youth festivals and also acted as judge for various youth festivals. She has attended and presented research paper in 22 international, national seminar and conferences. She is author of 3 books published from Germany. 1 book got translated into 8 languages: French, Spanish, Dutch, German, Polish, Russian, Portuguese, and Italian. She is also editor of 3 international board and reviewer of 7 international journals.
Indeed, a great versatile personalities amongst us. We welcome you, ma'am. We welcome you, ma'am. So I request you to start your deliberations, ma'am. We are eagerly waiting for your lecture. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks a lot, Ranjeeta sir. So today, very good morning to Dr. Nina Pajni madam, Virender Kumar ji, Rupinder Bangera madam, and all the faculties of the college of Govinkar Public College, as well as all the students and participants of this webinar. Today, I'm going to present here a small talk on music therapy for healing various diseases and disorders, that is the ailments. So let's start. I'd like to share my PPT along with you all, and it would help me and you to also understand the matter. So talking about music therapy, first we should know what music is. When I talk about music, music is all about tune or melody, rhythm or beat, wordings or lyrics. The life begins with the first rhythm, that is the heartbeat. Is my screen completely visible? Yes, ma'am. Okay, thanks. Yes, ma'am. Well, so all the life processes follow certain rhythm. A rhythm that is present within us is called biological rhythm. Now let's see. The music has impact on control and coordination of human body as it affects the nervous system, heart, and also all the glands. Their secretion and their coordination is impacted by a certain rhythm, which is known as biological rhythm. Music has been used for therapy in healing several diseases and disorders in most communities from very past time. And melody is the keynote of Indian music, and the raga is the basis of melody. Various ragas have been found to be very effective in curing many diseases. Hence, in India, different ragas have been used for treatment of different diseases through raga therapy or raga chikitsa. Music stimulates the cerebral cortex and autonomous nervous system, which sends vibration and impulses throughout the body, which regulates the control and coordination. The physiological status of any person varies with music depending on its style and ambience. The stimulative music increases physiological responses, while the sedative sort of music, that is the slow music, it decreases them. Heart and pulse rates, blood pressure, skin responses, and muscular or motor responses all show changes in response to music. Music reduces temporary feelings of anxiety. See, when we think of certain music, if a drum beat is there, which is very loud, we start stepping, isn't it? We start beating. Maybe we snap, or we may start clapping. We may somewhere keeping by our hand and we start beating it, tapping it, and that is the part of music. Music connects thinking and feelings too. So while talking about music and psychology, the music has impact on emotion, mood states, and thinking of a person. The loud beat of percussion instruments like drums can alter the emotions of a psychologically weak person. It happens many times. If there is a very vigorous drum beat, sometimes people start dancing like insane, and they actually behave something odd. What happens? No, somewhere in some regions, people say that "Devi Mai hai," yeah,
फिर भगवान जी उनके ऊपर कुछ ये किए हैं. But actually what happens, let me tell you, if the person is having certain hidden emotion within, if there is anger, if there is depression, if there is anxiety, it actually comes out in along with a loud beat of music. Okay? So I have seen many people like that in front of me. Human characteristics like mood states are influenced by music and can influence body imbalances. Psychological status and biofunction like heartbeat, breathing, transmission of nerve impulses works by oscillation. Oscillation means periodic beating. So music helps in relaxing stress, anxiety, and depression. That we have seen. Now, music has sedative effect also, as we can see. We can see in case of lullaby. You know, at childhood, our parents and grandparents, they used to make us sleep by singing some lullaby. लोरिया सुना के हमें सुलाया करते थे. So that is the impact of music. That is the sedative effect of music actually. Now, what music does to us, does to our brain? It relaxes, it relieves stress, it smooths brain, it enhances memory, it helps decision making capability, it stimulates all our senses, it boosts our mood, it alters our emotion. Actually, you know, one of the only activity that stimulates, activates, and uses the entire brain is the music. People say dancing also have the similar effect. That they are correlated. Now, talking about music therapy, it is the systematic application of music to bring about changes in the emotional and physical health of a person. That is the physical or physiological as well as psychological health of any person. It is a scientific method of effective cures of disease through the power of music. It is another alternative therapy actually. The articulation, pitch, tone, and specific arrangement of the notes in a particular music stimulates, alleviates, and cures various ailments, including inducing the electromagnetic change in the body. Actually, what happens? Music is having impact on our nervous system. It controls our nerve. It soothes our nerve, and also our heart and the blood flow. Obviously, along with nervous stimulation and blood flow, if it can control that, it can control any part of our body, and obviously, for that reason, it can heal the diseases. Music evokes emotional responses as well as physiological responses. The rhythm is related to heart rate, blood pressure, breathing, and the whole multitude of vibrational periodicities that make up the body structure. So all these activities are having certain rhythm that I told you earlier. So it's called biorhythm. The production of morphine-like peptides known as endorphin, it is connected to certain musical experiences. If you listen to music which you like actually, then your body cells start secreting endorphin, which has morphine-like impact. That is, it is analgesic. It relieves the pains, it relieves anxiety and tension. Carefully chosen music can effectively enhance the flow of imagery and fantasy or renewal of memories. It can give you certain visualization, and with that, the memory power also gets enhanced. The sensory stimulation of music can create synthesizers of other senses. This is called synesthesis. That means sometimes in some people it has been seen that their sensory organs are so much activated that they can hear the colors, they can smell the colors, they can even see the taste. This is a very different thing. It's related to psychology. I'm not going in very deep of it. Synesthesia is very
different, and people think it's abnormal, but it is not. Actually, it is somewhat related to the music. The concept of music therapy is dependent on correct denotation and right use of the basic elements of music, such as notes, rhythm, volume, beats, and piece of melody. There are many ragas with numerous characteristics, hence different types of ragas are applied in different diseases for healing. As we know that ragas are mostly played in different times and in different season also. Ragas is based on time slot as well as season slot. Like some ragas, they are specially sung at the time of certain season, like Rag Megha Mallar could be sung only during the rainy season. It is sung actually. Rag Patti is for evening time. Rag Yaman is for early evening time, that is a dusk time. Rag Vairav Vairavi is for early morning, that is the dawn time. So time slot as well as season time has been given to various ragas because they have different type of impact on our nerves. Due to this characteristic of ragas, the raga therapy is developed to treat patients. So in various countries, music therapy is in use for particularly therapeutic use in hospitals, particularly in the hospitals. Now, let's see what is raga. As music has impact on human physiological and psychological status, it could be used in treating various disorders or abnormalities. Research has shown that music and musical instruments does have healing effect. The rhythmic sound of temple bells and the conch shell produced during devotional practices have also been found to have therapeutic application in India, and hence it is used for rituals and customs. You know, the sound of conch shell, that is the shankh, could kill the bacteria in the surrounding area of 2,200 square feet and inactivate those in about 400 square feet area further beyond. So that is why the conch shell of the shankha is in use for rituals in our customs from very long time. The effect of music therapy may be immediate or slow, depending upon the subject, that is the person on which we are giving the music therapy, his mental condition, environment, and the type of music that is selected for having the desired. Indian music is probably the most complex musical system in the world, which is very, very ancient. It has its origin in the Vedas, that is the Samveda. The musicians made great contributions to Indian music and developed the modern styles of bhajan, kirtan, concert formats, training techniques, etc., which are still in use. The music was highly influenced by Arabic and Persian styles. The Indian music I'm talking about, the Indian music is basically composed of ragas. Depending on their nature, a raga could induce or intensify joy or sorrow, violence or peace, and it is this quality which forms the basis of musical application. You know, sometimes we listen to certain music and we can relate with our life. कुछ सारे गाने ऐसे होते हैं कि वो हम अपने लाइफ से रिलेट कर लेते हैं और उसको सुनते हुए आंखों से आंसू आ जाती है. Not only that, it's not only the lyrics that makes us cry, but if there is a good music and the person is emotionally weak, or the person is having certain emotion in his or her heart, so क्या होता है कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन के भी अपनी आंखों से आंसू आ जाती है. So it is the power of music. So these are certain classical Indian musical instruments. We'll now proceed towards how it is used for treating the diseases. Playing, performing, and even listening to appropriate ragas can work as a medicine. Various ragas have since been recognized to have definite impact on certain elements. Raga therapy or Raga Chikitsa was an ancient manuscript which dealt with therapeutic effects of raga. Ragas are related to different parts of the brain according to changes in nature and development of a particular emotion, mood, or sentiment in human. अभी जैसे मैंने बताया कि रागा जो भी हमारे रहते हैं उनके अलग अलग समय होते हैं.
रात्रि प्रथम प्रहर, रात्रि द्वितीय प्रहर, फिर ऐसे ही सुबह में भी होती है। कुछ रागें दोपहर के होते हैं, जैसे राग पूर्वी, इसे दोपहर को गाया जाता है, सुना जाता है। So it is having particular time of the day to be played. Raga Chikitsa dealt with curative ragas and suggested that specific ragas have specific therapeutic and mood enhancing characteristics. So Indian music therapy could be related to the different energy centers or chakras of human body. As we know, there are 7 chakras. These 7 chakras could be influenced by the particular music and particular ragas. So here are certain ragas which could be used for treatment of different diseases. Like Shivaranjani is for dementia, Alzheimer, and all other memory problems. Vijayanti is for paralysis and disorders of mind, that is neuropsychological problems. Like Charukesi, Kalyani, and Chandrakoms are for heart ailments. Anand Vairavi is for stomach pain, kidney problems. Amritavashini is for diseases related to heart. Then Madhyamanti is for paralysis, giddiness, pain in legs, nervous complaints. Saranga to cure acidity. Bhageshri is for diabetes and hypertension, and this is very much effective. Let me tell you, Bhageshri could be played and listened to heal diabetes. Actually, Darbari Kannada is to ease the tension and anxiety. Bhupali, Malkos, Asahuri, Ayurvedi, and Tori, they are having impact on high blood pressure. Bahar, Kafi, Hawans, they are for insomnia and sleep disorders. Actually, Vairavi could cure cancer, TB, severe cold, phlegm, sinus, toothache. Obviously, these are all depending on the degree of that particular disease, and that to the person on which you are giving the therapy, that person should have perceptibility. Malhar is for asthma and sunstroke. Tori, Purvi, Jayanti is for cold and headache. So we'll listen to the song afterwards, and music afterwards. I'll give one demonstration for stress healing. Let's come to the end of the PPT. Indian music therapy is an integration of ancient healing practices and musical traditions coupled with the recent modifications. It is based on long empirical traditions. There is a growing awareness that ragas could be a safe alternative for many medical interventions. Obviously, we can't think of replacing the surgery and all these things. If there is some acute problem, we can't go for music therapy. But if it is a slowly growing disorder, we can at least think of Indian music therapy. That is the raga therapy especially. It has been observed that medical treatment with music therapy has reduced the intake of antibiotics and painkillers. Not only that, also the tranquilizers over a period of time. Music therapy. Music actually helps improving human soul for collaborative learning for total life. As we are leading to stressful life in all fields of profession, music therapy could be a good relief for us. See, आज के दिन में कैसा है कि एकदम बचपन से लोग स्ट्रेस रहते हैं, बच्चे स्ट्रेस रहते हैं. मेनी टाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स जो है बर्डन कर देते हैं बच्चों को, नहीं तुमको क्लास में फर्स्ट आना ही है, तुमको गाना भी सीखना है, डांस सीखने हैं, इसके साथ ही आपको ड्राइंग सीखना है, कराटे क्लास भी जाना है, स्विमिंग क्लास भी जाना है. सो किड्स आर बर्डन, ओवर बर्डन rather, so they are under stress. Parents many times don't understand. Sometimes क्या होता है, बच्चे जो है मैल बिहेव करते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, उनको और डांटते भटकाते हैं. बट दे शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट द कंडीशन ऑफ दैट चाइल्ड, वो किस दौर से गुजर रहा है. एंड नॉट ओनली दैट, आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, जब आप कॉलेज में आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स नाउ, कॉलेज में आने के बाद एडमिशन के प्रोसीजर्स, उसके बाद तुरंत क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, अटेंडेंस कम हुए तो टीचर डांटते हैं, होता है ना. देन तुरंत एग्जाम के डेट्स आ जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर कंटिन्यूसली, टू सारे रहते हैं कि हाँ मुझे निकलना ही है, पास करने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं,
क्योंकि हमको आगे जाके नहीं तो फिर प्रॉब्लम होंगी। सो एक बार लगता है कि ठीक है चलो कॉलेज के दिन निकल गए, एक बार जॉब लग गई तो फिर टेंशन फ्री। फिर जॉब का टेंशन, जैसे पास आउट हुए तुरंत जॉब कहीं मिलेगा कि नहीं, इंटरव्यूज में जाना, कंटिन्यूअसली एंजाइटी और प्रेशर रहता है। साथ में जैसे जॉब लग गए तो टारगेट अचीव करने हैं, आज ये है कल वो है, खत्म करने हैं इसको, या फिर जॉब में पता नहीं, आजकल तो बहुत सारे जॉब्स इनसिक्योर भी है, सो पीपल आर लाइक ऑलवेज स्ट्रेस्ड। दैट इज व्हाई इमैच्योर ब्लड प्रेशर, इमैच्योर डायबिटीज, इमैच्योर हार्ट अटैक्स, ये सारे केसेस हमको सुनने में मिल रहे हैं। सो इसको एटलीस्ट हम म्यूजिक थेरेपी से तो हील कर ही सकते हैं। So I'd like to suggest that go for music therapy, listen to good music of your choice, at least at evening when you come back home after your college or after your job, wherever you are. Take some time to listen to good music of your choice. This is one paper that I have published in International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research regarding this music therapy on human various ailments. I'd like to thank Dr. Neena Satpajni ma'am, the principal of Govindgarh Public College, Alawakhanna, Punjab, for organizing this webinar and inviting me. I'd also like to thank my parents, Mr. Hitendra Bhattacharya and Mrs. Anita Bhattacharya, and also my grandparents, late Mr. Pramodanath Bhattacharya and late Mrs. Shanti Bhattacharya, my first gurus for training me music. I have started music in I think I remember I was 3 years old only, and I started singing and getting training from my parents, grandparents, and my aunts also. I used to play the harmonium that time only, and afterwards, within 1 or 2 years, I started playing harmonium without seeing it. If I listen to any music, I could have composed the notes and notations. I could have automatically it comes to my hand, to my fingers. I used to play the harmonium a lot. Sri Prafula Giri was my actual guru for vocal classical training of music, and I have been trained in Nazrul Giti and Ravindra Sangeet from Mrs. Ruby Mukherjee. They all were my gurus. I'd like to pranam them all and my hearty respect to all of them. These are certain references that I have gone through for this particular session. Thank you very much. Now, I'd like to share uh, one or two pieces of music so that I can give you a small demonstration of music therapy. Just a moment. Get open. My screen is visible now. Visible, ma'am. Please now Yes, enjoy yes, it is the, visible. okay, now please enjoy the music. Close your eyes and just listen to the music. Leave all thoughts behind.
will your child win free education for Sorry, that's it comes automatically. First started working with energy over 20 years ago when I was an engineer, Every time it and comes, I'm really I sorry for developed a this. practice not This music is for relaxation, de-stress, relieving anxiety. Just feel the soothness. Close your eyes and simply relax. So here we come to the end of the videos, Thank you, Dr. and thank you very much. I think you have you got relaxation with this music. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Okay. Can I ask question, yes, Professor ma'am. Varun? Sure. अच्छा, I enjoyed a lot. मुझे पता है कि स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा. शायद ये पहला लेक्चर है जो स्ट्रेस फ्री है और उनको कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ रहे क्योंकि रोज वेबिनार में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक या ऐसा चलता है. And I appreciate you. Being a biologist, you can very well understand the biology of the body and the nerve science and how our nervous system is working and how it is responding to various music. Because you are into it and you have very good qualification in that practicing and mentoring for the same. And I appreciate your interest, sincere dedication and devotion for the same. So my question is कि बहुत बार जैसे आपने अब YouTube से दिखाया था वेरियस रागास आपने दिखाए थे yes. तो क्या डेली लाइफ में उसी को लेके हम सुन सकते हैं या कोई स्पेसिफिक है Sure. जैसे हर बंदे की गुड म्यूजिक की है दैट वेरीज फ्रॉम एज टू Yes. एज. एक एज में Yes. क्या होता है कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मान लो मुझे गायत्री मंत्र सुबह सुनना पसंद है, मैं म्यूजिक लगाती हूँ, तो मेरा बेटा जो 18 इयर्स का है उसको वो आवाज पसंद नहीं है. ठीक है, मैं जिसे गुड म्यूजिक मानती हूँ हो सकता है मेरी एज मेंटल एज के अकॉर्डिंगली और एक बंदा अपनी मेंटल एज के अकॉर्डिंगली वो ज्यादा एज वाले भी कई बार उसे पसंद नहीं करते, मेरी एज ग्रुप के भी वो उसे गुड म्यूजिक नहीं मानते, समहाउ वो उसे एंजॉय नहीं करते.
So, Yes. first question is how to differentiate between good music and not good. None of the music is bad, मतलब कि not good one. और दूसरा है कि कैसे चूज करें कि कौन सी चीज किस पे इफेक्टिव है. हमारे यहाँ म्यूजिक थेरेपिस्ट इंडिया में बहुत कम है. मुझे Yes. आपके बारे में पता चला दैट यू प्रैक्टिसेस दैट, अदरवाइज कोई ऐसी क्वालिफिकेशन या ऐसा कोई अब प्रोफेशनली क्वालिफाइड Yes. नहीं होते, आम ये नहीं मिलते कि हम म्यूजिक थेरेपिस्ट पे करें, और हमें Yes. एक बहुत जल्दी किसी भी डिजीज का सॉल्यूशन चाहिए होता है, क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए म्यूजिक थेरेपी. Yes. एंड Yeah. मुझे जो समझ आया है कि लाइफस्टाइल डिजीज अगर हैं तो ये इसमें ज्यादा इफेक्टिव है. क्रॉनिक में Yes. तो Yes. Yes. वो एड ऑन कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी को आप आईवी वगैरह लगा रहे हो, जैसे आप किसी का ध्यान डाइवर्ट करते हो तो उस वक्त आप इसे यूज करोगे तो पेन कम होगी, है Obviously. ना. अदर हाँ, तो डे टू डे लाइफ में गुड म्यूजिक एंड नॉट गुड में कैसे डिफरेंशिएट करें और क्या यूज कर सकते हैं. Okay. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिक कभी भी बैड तो नहीं होता है. हाँ, हाँ, बैड नहीं होता. जंक जरूर होता है. जैसे कि हम फूड के बारे में भी ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ फूड जो है गुड होता है, कुछ जंक होता है. बैड फूड एज सच कुछ नहीं होता है. एंड दैट टू एज द फूड आल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. उसके टेस्ट जो है सबके अलग रहते हैं. किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को खट्टे पसंद होते हैं, किसी को मीठे पसंद होता है. सो इट्स कंप्लीटली पर्सनल चॉइस, जस्ट लाइक दैट. म्यूजिक का भी वैसा ही है. एक तो पहली बात है, एक पर्सन की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि उनको किस तरह का म्यूजिक पसंद आए. इसके बाद जो है दूसरी बात जो आपने अभी भी बताया कि एज ग्रुप के हिसाब से म्यूजिक के पसंद नापसंद जो है वो वैरी करते. लाइक एकदम छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको राइम जैसे म्यूजिक, मतलब रिदमिक म्यूजिक पसंद आएंगे ज्यादा. बहुत फास्ट रिदम भी नहीं, स्लो भी उतने नहीं. स्लो म्यूजिक हुए तो सो जाएंगे छोटे बच्चे, अगर 5 इयर्स तक के एज के हो तो. अब उसके बाद जो आता है एक एज जब मेनली एडोलेसेंस में थोड़ा सा उनको फास्ट बीट पसंद होती है, बिकॉज बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट वैसा रहता है. इस समय हार्मोन्स के सिक्रेशंस इस तरह के होते हैं, बॉडी के ग्रोथ इस तरह के होते हैं. फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल स्टेटस उनके ऐसे रहते हैं कि उस समय थोड़ा सा फास्ट म्यूजिक ही चाहिए होती है. बॉडी को भी वैसे ही म्यूजिक चाहिए होते हैं. उस समय उनको सोदिंग म्यूजिक, रिलैक्सेशन की म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं होती है एक्चुअली. हाँ, लेकिन ये जो मैं अभी बोली कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से काफी स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा भी सुने तो भी अच्छा लगता है. एंड नॉट ओनली दैट, क्या होता है कि एडोलेसेंस में, टीनेजर्स में बच्चों के जो है दे हैव डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फीलिंग्स. इमोशंस जो है बदलते रहते हैं, हर 2-2 3-3 दिन में इमोशन बदलते हैं. आज कोई अच्छे लगे तो फिर उनको फास्ट म्यूजिक पसंद आएंगे, थोड़े रोमांटिक म्यूजिक पसंद आएंगे. फिर वो अलग हो गए तो फिर उनको कुछ और तरह के म्यूजिक पसंद आएंगे, थोड़े स्लो म्यूजिक, लिरिकल म्यूजिक पसंद आएंगे उस समय. देन आफ्टर दैट जब टीनेज निकल जाती है 25 to 30-35 के एज में जो है थोड़े से उनको मीनिंगफुल म्यूजिक पसंद आते हैं, सॉन्ग्स. इसमें थोड़े से स्लो म्यूजिक भी पसंद आने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो फास्ट म्यूजिक छोड़ देते हैं. फास्ट म्यूजिक भी सुनते हैं, उसके साथ साथ थोड़े स्लो म्यूजिक भी पसंद आते हैं, लाइक गजल वगैरह जो है. इस समय उनको उनका किसी भी इंसान के अंदर से कर जाती है, गजल सुनना अच्छा लगता है, उनके लिरिक्स के मीनिंग समझ में आने लगती है, क्योंकि जिंदगी के मायने तभी तभी समझना शुरू हो जाती है इंसान. आफ्टर 40-50 जो है उनको थोड़ा सा स्लो म्यूजिक ही अच्छा लगता है मोस्टली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. मैंने फिर से कहा कि पर्सन टू पर्सन वैरीज. साइकोलॉजिकल स्टेटस के ऊपर भी डिफरेंशिएट करता है. अलग अगर साइकोलॉजिकल स्टेटस है, वी से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजिंग. वन इज क्रोनोलॉजिकल एज, कितने साल की उम्र हो रही है. एंड अदर वन इज मेंटल एज, कि आप अपने खुद को कितने उम्र के सोचते हो, उस पर भी डिपेंड करता है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ओनली, मेंटल एज के ऊपर डिपेंड करके लेकिन चॉइस की म्यूजिक की चॉइस होती है. सो ये कहीं भी गुड या बैड नहीं होते, सबकी पर्सनल चॉइस होती है. और हर तरह की म्यूजिक पहले सुनिए, उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है. एंड म्यूजिक डजंट हैव एनी बैरियर ऑफ लैंग्वेज.
मैं कभी कभी इजिप्शियन म्यूजिक सुनती हूँ, कभी चाइनीज म्यूजिक सुनती हूँ। दे आर वेरी गुड एक्चुअली, बहुत अच्छा लगता है। कभी आप इटालियन म्यूजिक भी सुन के देखिए। आई एम हैविंग सर्टेन कलेक्शंस ऑफ दोस। चूंकि रागा थेरेपी के ऊपर मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, कुछ लोगों को मैं इसके ऊपर काउंसलिंग भी की हूँ। इंसोम्निया मैंने हील किया है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हील किया स्टूडेंट्स के केस में। इंसोम्निया ऑब्वियसली काफी एल्डर पर्सन थे, उनका हील किया है। बच्चों में, स्टूडेंट्स में मुझे आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम अ प्रोफेसर इन कॉलेज, सो दैट क्या होता है कि मुझे बहुत सारे बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट रहती है एंड आई एवरी टाइम नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वन टू वन मेरी इंटरेक्शन होती है। सो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, दे यूज टू कम टू मी एंड दे यूज टू आस्क कि मैडम ऐसा हो रहा है, क्या करूँ, मुझे पढ़ाई जो है उसमें मन नहीं लग रहा है, या फिर मुझे याद नहीं रह रहा है, सब कुछ कैसा तो ब्लर दिखता है, ऐसा होने लगता है। सो आई गिव देम म्यूजिक थेरेपी। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है, मेमोरी पावर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है। ऐसे डायबिटीज का जो है वो चालू है, एंड इंसोम्निया का तो एकदम बहुत अच्छे से हो जाता है। डिप्रेशन का भी म्यूजिक थेरेपी से निकल के आ सकता है। वेल लेट मी टेल यू, इट्स ऑन मी ओनली। मैं खुद ही एक्सपीरियंस की हूँ। एक बार बहुत पहले की बात है, मैंने अपने आंखों के सामने एक रोड एक्सीडेंट देख लिया था और मेरे सामने दैट पर्सन स्पॉट डेथ हुई थी। तो आई फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड। उसके बाद मुझे काफी अंदर से तकलीफ होने लगी थी काफी दिन। तो मैंने वो एक ही म्यूजिक है एक ही सॉन्ग था उस समय एक्चुअली। उसके उस दिन शाम को मैं घर आके जस्ट ऐसे ही मोबाइल चेक कर रही थी, तो गाना उसमें से मैंने फाइंड आउट किया और सुन रही थी, यू माइट बी नोइंग अभी मुझ में कहीं। तो वो सुनने के बाद पता नहीं मेरे जैसे कि वो एक्सीडेंट का सीन मेरे आंखों के सामने वापस आया और आई स्टार्टेड क्राइंग, लाइक आई वाज फीलिंग सो बैड। तो मैं फिर से वो गाना सुनी दोबारा, फिर तीसरी बार, चौथी बार। ऐसा सुनने के बाद काफी देर तक सुनती रही, तो मुझे एक अंदर से गुड फीलिंग होने लगी। यू वोंट बिलीव, कंप्लीट 1 मंथ मैंने उसी एक गाने को ऑन लूप डेली सुने, while गोइंग टू द कॉलेज एंड कमिंग बैक फ्रॉम द कॉलेज। दैट टाइम मैं मेरे कॉलेज आने जाने का टाइमिंग 45 मिनट्स पे। सो मैं वो सुनते हुए जाती थी 45 मिनट्स 90, और वापस में 45 मिनट्स यानी कि 90 मिनट्स डेली उस एक ही गाने को सुनती थी। और उससे धीरे धीरे मैं पूरे डिप्रेशन से बाहर निकल आई। सो इट वाज लाइक आई फेल्ट माई सेल्फ। वो मैं खुद में एक्सपीरियंस की हूँ और उसके बाद से मैं काउंसलिंग स्टार्ट की। इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करना शुरू किया और फिर फाइनली आई केम हियर कि मैं लोगों को म्यूजिक थेरेपी दे सकूँ। एंड ऑब्वियसली आई डोंट गो फॉर ऑफिशियल काउंसलिंग, बट अनऑफिशियली मैं काउंसल करती हूँ। बच्चों को भी देती हूँ, दूसरे लोग भी जो भी अप्रोच करते हैं मैं उनको भी बताती हूँ। एंड लिसनिंग टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक कैन रियली हेल्प। Any more questions? ओके, थैंक यू। मतलब कि हमारा मेंटल लेवल खुद ही सेट कर लेता है कि कौन सा म्यूजिक मुझे हमको चाहिए, चाहिए, हमको है चाहिए। ना? वो है ना? हमारे कोई तो भी चीज मैडम, हमारी बॉडी जो है ना, वो खुद ही हमको प्रोवोक करते हैं कि हमको क्या चाहिए। आपको जब भूख लगती है ना, तो भी आप देखिए, कभी आपको कुछ पर्टिकुलर चीज खाने की मन होती है, तो आप समझिए कि वो एक्चुअली हमको अपने अंदर से आ रही है। हमारा बॉडी हमको सिग्नल भेज रहा है कि यही चीज आप खाओ, ये चीज आपके लिए भी चाहिए आपके बॉडी। सो यू माइट हैव हर्ड कि जो जिनको डायबिटीज होती है उनको मीठा खाने का बहुत ये होता है, लालच होता है, वो चोरी करके भी मीठे खा लेते हैं, ऐसे भी होते हैं, है ना। सो क्या होता है एक्चुअली बॉडी सेल्स को उस वक्त ग्लूकोज नहीं मिल रही। सो बॉडी सेल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ब्लड में कितना ग्लूकोज है। वो क्या बोलते हैं कि अरे इसके बॉडी में ग्लूकोज आ नहीं रही है, मतलब मीठा नहीं खा रहा है कुछ, आदर कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई, तो कार्बोहाइड्रेट को टाइम लगेगा, लेकिन मीठा चीज खाया तो इमीडिएट ग्लूकोज का इंटेक हो जाएगा। सो लेट अस गिव अ सिग्नल कि आपको मीठा चाहिए, आपको मीठा चाहिए, सो दैट पर्सन गो फॉर स्वीट थिंग्स। ये होता है। सो बॉडी की अपनी अर्ज होती है, उसके हिसाब से हमारे ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचते हैं, वो चाहे फूड के केस में हो या फिर म्यूजिक के केस में हो। सभी इसमें बॉडी जो चाहती है, टेस्ट भी वैसे ही है।
बॉडी हाँ, खुद सिग्नल भेजती है आपको नींद चाहिए अभी तो आप सो, आपको पर रेस्ट चाहिए तो या पर जैसे हेल्दी लाइफ के लिए कहा जाता है कि जंक फूड से दूर रहें, तो Yes. इसीलिए यहाँ भी हेल्दी म्यूजिक सुने और जंक म्यूजिक से दूर रहें, थोड़े दूर है ना? रहे। अब गुड वो म्यूजिक डिफरेंशिएट, इज ऑब्वियसली, म्यूजिक हाँ, के केस में एक और चीज है मैडम, लेट मी टेल यू। म्यूजिक एक होता है जो आपको पसंद है, आप सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है। दूसरी चीज ये है कि जो म्यूजिक आप बार बार सुनते जाते हैं ना, वो आपको अच्छा लगेगा, ये भी एक बात। कभी कहीं म्यूजिक एक्चुअली इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेमोरी। सो कोई म्यूजिक आपके पर्टिकुलर एक इंसिडेंस के समय आपने सुना था, तो वो चीज आपको हमेशा उस मेमोरी के पास ले जाते हैं, इसलिए वो म्यूजिक आपको sometimes it happens. एक मैम क्वेश्चन है यहाँ पे, Yes, ma'am. प्लीज टेल अस द बेस्ट रागस फॉर माइंड रिलैक्सेशन। किसी स्टूडेंट ने पूछा है, हाँ बेस्ट रागास फॉर माइंड रिलैक्सेशन। हाँ, बेस्ट रागस जो है इसमें से एक तो राग हंसध्वनि है। हंसध्वनि का इम्पैक्ट हमारे माइंड के ऊपर होती है, नर्वस सिस्टम के ऊपर होती है, सो इट रिलैक्सेस। हंसध्वनि एक है और राग मोहना ये दूसरे राग है। ये दोनों राग बहुत ही इफेक्टिव है। ये इजीली यूट्यूब पे मिल जाते हैं। यस 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 यस। वैसे हम म्यूजिक वोकल यहाँ पे कॉलेज में हमारे सब्जेक्ट है, पर सिर्फ अब बीए के स्टूडेंट्स ही उसे इलेक्टिव ले पाते हैं या कुछ बाकी बच्चे उसे ज्वाइन करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छा रहेगा एनईपी में कि इंटरडिसिप्लिनरी आ जाएगा। यस यस। कोई और स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? सब बहुत प्रेज कर रहे हैं आपके लेक्चर की, वंडरफुल लेक्चर, नॉलेजेबल and excellent, good presentation. So over to Professor Varinder, please. अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन आ गया, काइंडली शेयर रागा इन योर वॉइस फॉर 1 or 2 minutes. ये मैं चाहता हूँ कि the lecture will be incomplete without your voice, ma'am, please. हाँ, it's good. She sing very sweetly. मैंने सुना है, सुनाइए प्लीज। ओके ओके ओके, रागा तो नहीं, मैं 2 लाइन किसी गाने की सुनाती हूँ अभी। जैसे मैंने यही गाने बोले हैं कि मुझे बहुत पसंद है, तो फिर मैं उसी को गाने की कोशिश करती हूँ। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन, आई हार्डली सिंग, बट इट्स फाइन। अगर बच्चे बोल रहे हैं तो फिर आई ऑब्वियसली सिंग फॉर स्टूडेंट्स। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि अभी ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना ही मेरे वॉइस की ऐसी कंडीशन। आई एम इन लिटिल हरी आल्सो टू गो टू द कॉलेज एनीवेज। आई ऑब्वियसली आपने बोले हैं तो फिर भी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा मैं तो कभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छोड़ो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ जो बना यार लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू। Wonderful, ma'am. ब्यूटीफुल वॉइस मैम, बहुत अच्छी, आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत। Students, all are requested to on your videos because we want to take a screenshot for the press release, please. You all are requested to show your camera, please.
Should I conclude, ma'am? Hurry up, hurry up. स्टूडेंट्स अब पता चलेगा सब लोग फ्रेश होकर बैठे हैं सो तो नहीं रहे थे चल रहे थे ऐसा नहीं लेक्चर नहीं क्या ऑनलाइन नहीं आपके लेक्चर की वजह से नहीं ऑनलाइन में अब सारे अपने मजे में होते हैं घर में कोई बेड में बैठा पढ़ रहा होता है कोई कैसे when something new is there people generally don't ये आने में इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है थोड़ा सा है ना and my students also do the same thing when I used to say them that keep your camera on once अब so that yeah Should I conclude, ma'am? Principal, yes ma'am? yes Yeah. yes Respected ma'am, respected Ranjeeta ma'am, you have rightly elaborated that music has impact on mind, body, and nervous system. Music reduces temporarily feeling of an anxiety as well as reduce depression. Ma'am, you have really and rightly elaborated the rationale of music in our life and its impact on our body. I, on behalf of Dr. Neena Seth-Prajni, Principal of our college, Management Trust, teachers, students, thank you for delivering such a wonderful lecture. Once again, thank you so much and kindly have a stay with us so that whenever we will call you again for the upcoming lectures, so you should definitely attend our invitations. Please. Thank you so much, ma'am. we are going to have same lecture for our teachers also thank you for connecting thank you so much Thank you so much. Thank you so much. Thank you all.